yesterday. Okay, so when I say that I have a capacitor, okay, I have a one capacitor C, okay, and I'm applying. Now I can apply here two ways. Okay, one thing I can apply a variable voltage, time dependent voltage. Okay, so the current in the capacitor is given by C dV by dt. Okay, so when I'm applying constant dV by dt here, okay, there's two way. One thing I can apply current here. So if I apply constant current here, okay, in the circuit, if I apply suppose constant current I'm applying, constant current I, then what will happen? I is constant, C is constant, so automatically what will become? Your dV by dt will become constant. Okay, dV by dt is positive. Now dV by dt is constant and positive, so what will happen? The capacitor voltage will increase with time, because now dV by dt is positive, so dV by dt is positive. That means dV will change time. So now depending on your time, how much time you're applying, okay, and what is the dV value of dV by dt, how much voltage you want to go, the capacitor voltage will increase, okay, up to some fixed voltage V. Capacitor will charge. Okay, now if you want to apply, now suppose you reverse the current. Now if you reverse the current will be I equal to C dV by dt. Okay, now in this case what will happen? Your dV by dt become negative. Okay, so when dV by dt become negative, again capacitor will start, capacitor voltage will again start to decrease, and it will go and up to whatever time you set. Okay, so you just come back to this way. Okay, so there's two way. Either you apply constant current to the circuit, then the voltage will increase to the capacitor. Okay, capacitor will charge. Now second thing is there, if you're applying constant dV by dt, okay, now you apply constant dV by dt, okay, then what will happen? You get constant current in the circuit. So because C is constant, okay, C is constant, dV by dt is constant. So what happens? You get the constant current. So yesterday, that's why I told you when I plot the current, okay, with time, okay, if dV by dt is positive, fixed positive, you get constant current I with time, okay, with time. And when you reverse the dV by dt, yesterday, like we have seen yesterday, then again when you reverse and the value is same and negative, then you get the negative current, I versus T graph. This we have seen yesterday. Yes or no? Is that clear? इसमें क्या question है, Parampreet? No, sir. Okay. Okay, dV by dt is positive. We have seen two things. We'll do one more problem today. And when I say you plot I versus V plot, IV graph. Okay, so when I plot IV graph, I versus V graph for the same system. Okay, so now what will happen if you are applying fixed dV by dt? Okay, so now what you expect? How we are drawn? I told that if you are scan rate is fixed, okay, then you get I versus V graph like this. Okay, now how much voltage you want to scan? You're applying fixed dV by dt. That means you want to reach. Now you want to reach like this. You want to reach here. Okay, so you're applying this kind of voltage to the system dV by dt. So you want to reach, suppose 1 second or 2 seconds, you want to reach here and come back to again here voltage. Okay, so when you apply positive dV by dt, then you get a positive current in the circuit. Okay, same time voltage also increasing. Voltage will increase up to what time? Whatever you fix, time you fix, and dV by dt you fixed. Okay, and up to here you will get voltage. Now again, if you decrease, you would not negative dV by dt, you fix the scan rate negative. Okay, reverse. If you want to fix reverse, you want to come suppose 1 volt. Now you want to come to 0 volt. Then dV by dt become negative. Okay, once dV by dt negative, now you get same current value but in negative direction, and voltage slowly will decrease. Slowly voltage will decrease,
and it comes back to 0. Okay, so this way you got a cyclic voltagram. Okay, so there are two things. Okay, if you apply this kind of ramp, you get this current. If you apply fixed current, you get this kind of graph. Clear? With time, if same time t, if you get this kind of, suppose this is 1 second. So if 1 second you apply this fixed current, your voltage will go like this. Okay, then you apply next 1 second, you apply 1 to 2 second, 1 to 2 second. If you apply negative current, then your voltage comes down like this. Or similarly, if you apply this kind of voltage dv by dt positive, then you get this current. If you go apply this current, you get this current. Both are same thing. So this is the way of capacitor works. Okay, any question? No, sir, clear. Okay, so Soham. Clear, sir. Yeah. Okay. So now let us do some more problems. Okay. So suppose you have been given a voltage ramp like this. Okay, you are applying voltage, okay, with time t. This is your 1 second, this is your 2 second, this is your 3 second, and this is your 4 second. Okay, now this voltage is plus 50 and this voltage is minus 50. Okay, now please find the current I versus t graph. Okay, find the I versus t graph. So I, you know, I is your C dV by dt. Okay, and the C value should be given in the question. C value is 200 microfarad. It is given. Okay, now I want to find my current in this time period. Okay, what is the current when that dV by dt, when V is increasing with time? Okay, so what is current? Okay, and when this is the slope, this is the dV by dt, then what is the current? And when this is a dV by dt, what is the current? Okay, so this is the same slope, this is the same slope, this is the same slope. There are 3 intervals. Okay, so I have to write a dV by dt for all these 3 interval. Let me write a first equation of V with, okay, in this 3 interval. So Vt here, the slope is what? How much slope is there? 50t. Slope is y equal to mx plus c will be 0 here for this graph, and this timing is what? This timing is your t is between 0 to 1. Okay, so this is your first equation. Second equation, start from here to it goes to here. Okay, tell me what is the equation? Tell me please, what is the slope? Minus Question will be minus 50t plus 100. No, slope. Yes, sir. Slope is minus 50. Is still minus. minus 50. So how do you know minus 50 slope? Because we are going from 1 to now 3, 2, and difference Minus 100. minus 0. So minus 50 plus 100. Okay. Now you can check here. If I put 2 t is equal to 2, then this should become 0. Okay. If I put t is equal to 3, then should minus 50 should go minus 50. If you put t equals to 1, then should go plus 50, showing plus 50. Then this equation is correct. So current is comes out to be 10 milliampere for 0 to 1, and Yes, minus 10 for 1 to 3, and 10 for 3 to 4. Yes, correct. Okay. So now this is your t time, and now this time is between 1 to 3 second, and the third equation is you have, okay. Now again the slope is how much? 50 plus 50t. Now slope is plus. Okay, what should I add here? Tell me. What should I add? What is the constant c here this time? 200. Okay, minus 200 or plus 200? Minus 200. Minus 200. Okay, we put t equal to 4, 200, 200, 0. If you put t equal to 3, okay, then 350 minus 50. If you put t equal to 2, then 100. T equal to 2. What should come? This is slope. Okay, this is curve. So we have to show only these 2 points. Okay, so this is should be. Please someone check whether it's correct or not. Okay, so now 3 to 4 time 3 to 4. This is the equation. Okay, now just you have to find I
Okay, I is C dV by dt. So if you calculate dV by dt is 50 here, and C is 200 microfarad. Okay, and similarly for second interval, again you have minus 50, C is 200 microfarad, and the third interval is again 50, and you have this 200 microfarad. Okay, so this is 0 to t 1, 1 to t 3, and 3 to t 4. Okay, so I will be how much? This will be 10 milliampere. Okay, 0 to t 1, then minus 10 milliampere, 1 to t 3 second, and this will be again 10 milliampere. Okay, 3 to 4. Okay, now if you want, you can plot this graph. This graph will come how much? This come 10 up to 1, and then this will come like this. Okay, so this is up to 1, this is 2, this is 3. Okay, and the last is up to 4, 3 to 4. It is 10 milliampere. This is 10 milliampere, and this is your minus 10 milliampere. Okay, let us do one more problem. I'm erasing this one. If you Sir, want. 1 minute, sir. 1 minute. Sir, no, sir. हाँ ओके, इसलिए पूछ रहा हूँ. So, हाँ I minus 50 multiplied 200 microfarad जो है ना सेकेंड वाला, उसमें क्या है सर लिमिट? किस में लिमिट? In between 1 and 3. 1 and 3. This is 1 and 3. इसी को तो डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं. Okay, sir. Okay. Now the next question is, okay, I am giving current to the system. Okay, that will be 2, that will be 4. Okay, then it will be 6, and up to 6 only. Okay, and up to 2 seconds current is going like this, and then it's a constant current. Okay, constant current value is 100 milliampere, and initially current is a function of time. Okay, the capacitance value आपको दे रखा है कैपेसिटर 1 मिलीफैरड का, 1 मिलीफैरड, दैट इज 1 × 10⁻³ फैरड. ओके, ये बोल रहा है कैलकुलेट द वोल्टेज, कैलकुलेट द वोल्टेज, ओके, across capacitor, across it at t is equal to, this time is in millisecond. Okay, so keep in mind 2 millisecond पे voltage क्या है, because you are giving current, so voltage will increase, and at 5 millisecond what is the, and t equals to 5 millisecond, what is the voltage of capacitor. Okay, so कौन सा फॉर्मूला यूज करें अभी बताओ, कौन सा फॉर्मूला आपको दे रखा है? t is equal to 0 पे कैपेसिटर का वोल्टेज BC 0 है. Which formula I should use? V equal to 1 by C integration I dt. Yes. Okay, so you want to, so first you want to find, so current is different, here is current different, and this then current is different. Okay, so the simple thing is there, here initial voltage is 0. If you want to use this type, this current, okay,
then after reaching this t equal to 2 millisecond, there will be some voltage. And when you go for 2 millisecond to 5 millisecond, okay, so there will be some initial voltage. Here initial voltage is 0. Current, this current graph, okay, this says initial voltage is 0. So now voltage will increase the time and it will have some voltage here. And when you put this interval, then initial voltage will not be 0. There will be some voltage, okay. Or if you want, you can directly calculate putting the current value for both the limits, okay. You can directly calculate, it is your choice, okay. So calculate now what V, put the V. So VT kya aayega? Because this is asking for two different intervals, so I'm breaking this one, okay. So first I will calculate T is equal to 2 1 by C I dt, and Vc at T is equal to 0, which is given already 0, okay. So I have 1 by C, that is 10 to the power minus 3, okay. Then I, what is the equation for I? How can I write I? Tell me. 0.1 t minus 0.5. What is I here? I, this I is 50t. I is what? 50t or yes or no? For this interval. What is slope? Y equal to mx. Okay. 100 minus 0.2 minus. So I equals to 50t. Okay. And that I is also in, so t is in millisecond. T is in millisecond. Okay. So what I can write here, I can write 0 to 2, I is 50t dt. This is 0. So I want V at t is equal to 2 second to millisecond. 2 millisecond. So this will give me 1 upon 10 raised to power minus 3, 50. Okay. T square by 2, and the time is 0 to 2 millisecond. Okay. So this will give me 1 upon 10 raised to power minus 3, 50. If I put 1 by 2 is out, T square is 4 millisecond. 4 millisecond है, तो millisecond का हो जाएगा 10 to the power minus 6. Okay. So this will be your voltage. So if you cut this one, you have 10 to the power minus 3 remaining here. Okay. And then how much is 200? 200 and 100. 200, so 100, and this is 10 to the power minus 3 volts. Okay. That become your 100 millivolt. So at t is equal to 2 seconds, you have the voltage equals to 100 millivolt. Now let us solve this for हमने यार लिमिट 0 to 2 में वोल्टेज निकाला है ना, तो एग्जैक्टली 2 इस पे वही कैसे होगा? अरे हमने ये भी हमने करंट को 2 सेकंड फ्लो किया है. ओके. किस कौन सी करंट है? करंट इक्वल टू 50t को हमने 2 सेकंड के लिए किया है, तो 2 सेकंड के बाद में इसका वोल्टेज क्या है? इनिशियल वोल्टेज 0 है. इनिशियल वोल्टेज 0 है. ये चलाने के बाद में लास्ट t इक्वल 2 पे रुक गए हैं, हम वोल्टेज निकाल रहे हैं यहाँ पे भी. ये क्या है? v इक्वल टू टाइम t. Yes, sir. Okay. अब now the second thing is Sir, हाँ. here I equals to 50t. How sir? अरे तो you, why don't you calculate this equation? What is the equation of y here? Y equal to mx equation not there. Time period is 2 second. This is y2 minus y1 100, t2 minus t1 2. 2. Okay. So slope is 50. Okay. सर हाँ. वो राइट हैंड साइड में जो इक्वेशन है उसमें वो माइनस 10 to the power minus 3 कहाँ से आया? इसमें उसके नीचे वाला. ये वाला ना. हाँ हाँ. अरे ये 10 to the power minus 6 था ना. अब t पुट करोगे ना इसमें, t इक्वल टू क्या है? मिली सेकंड है. मिली सेकंड क्या होता है? 2 मिली सेकंड. 10 to the power minus. अच्छा ओके ओके सर, गॉट इट. स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा. यस सर. तभी तो मैं बार बार बोल रहा हूँ मिली सेकंड है. अगर कोई चीज नो यूज, व्हाई शुड आई स्पीक? मैं यहाँ पे एनर्जी क्यों खर्च कर रहा हूँ? बार शुरू से मैं बोला स्केल मिली सेकंड में, ध्यान रखो उसको मिली सेकंड में. ओके ओके.
So the next question now is still is remaining. Okay, the second part. I want to go from what? I want dt now at 5 millisecond. Okay. Now this time same 1 by c. I have to go for 2 to 5 second I dt. Okay, and I'm starting from 2. So what is the voltage at t is equal to 2 millisecond? Okay. Now this time for this interval current is given 100 milliampere. This is 10 to the power minus 3. Okay. I is constant, so you can bring it out 10 to the power minus 3, and dt will be 5 minus 2 milliseconds. Okay. So 5 millisecond minus 2 millisecond. Okay. And plus here this voltage is 100 millivolt. Okay. So what will become now? This 10 to the power minus 3, 10 to the power cancel. You have 100 here, and 5 minus 2, 3. Okay, 3 into 10 to the power minus 3, and you have 100 millivolt. Okay, and so this becomes 300 millivolt. This is 100 millivolt. So V at t is equal to 5 millisecond is your 400 millivolt. Clear? Yes, sir. Beta do na? Okay, I'm rubbing. Yes, sir. I'll ask in stay 2 seconds, then you have to reply. Okay, then so you have been given a 6 milliampere source. Okay, then you have a 3 kilo ohm, then you have 2 kilo ohm, you have 5 kilo ohm. Okay, here you have one capacitor. Capacitor has this capacity 2 millifarad. Okay, then you have this 4 ohm. Okay, and here you have a capacitor of 2 millifarad. This is also capacitor of 2 millifarad. Okay, so he asking obtain the energy stored in each capacitor. Okay, so we have to calculate energy stored. Energy stored हमको निकालना है. Okay, so energy stored in the capacitor क्या होती है बताओ? If I say W1, energy stored क्या होती है? WC कितनी होती है? Half of C. Half CV square. Half CB square. Very good. So half C the 1 square if it's a capacitor 1, and capacitor 2 will be C2 half C V2 square. Okay. Now only thing is that you need to calculate what? You need to calculate what is the voltage of V1, C1, C2. Say this is C1. Say this is C2. Please find out the voltage now. कैसे निकालते हैं वोल्टेज बताओ? Capacitor open. Very good. So capacitor will become open once it is charged DC. Once capacitor charges, it become open. So make it open. DC circuit है, तो सोचना ही नहीं है. Steady state है, circuit लगा हुआ है. T is equal to 0 पूछा ही नहीं है. Okay? कि ऐसा लगाया और T0 पर क्या ऐसा क्वेश्चन पूछा ही नहीं है. अभी तो बस लगा हुआ है. अब पूछा है वोल्टेज कितना है. तो वोल्टेज मतलब स्टडी स्टेट में वोल्टेज कितना है. तो मेक इट ओपन. इसको ओपन कर दिया यहाँ पर. इसको भी ओपन कर दिया यहाँ पर. ओपन का मतलब यहाँ पे है कैपेसिटर.
तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि ओपन है इसका मतलब क्या है, वंस इट इज चार्ज इट विल नॉट अलाउ एनी करंट इन दैट ब्रांच वेयर इट इज प्लेस्ड। यहाँ पर भी ये होगा, वहां पे करंट को आने नहीं देगा क्योंकि वो बराबर वोल्टेज हो गया, उस ब्रांच में जो वोल्टेज है उसके बराबर हो गया वो, तो उस ब्रांच में करंट को आने नहीं देगा। ठीक है, नाउ दिस इज वोल्टेज अक्रॉस, सो दिस विल बी योर V1 एंड दिस विल बी योर V2। ओके, निकालो V1, बताओ कितना है V1 V2। So simple. Okay, listen carefully. I want to find voltage V1. That means I need to find what is current here. Okay, this is open. This is open. So V1 equal to 4 volt. V1 equals to, निकालते हैं, मुझे याद नहीं है आंसर मेरे पास, कर निकालते हैं इसको। ठीक है, Yes, sir. हाँ, so बस निकाल, ये 6 मिलियन पे Because करता है। I1 equal to 2 milliampere. Yes, yes. 3 by 9 into 6, and that is multiplied with. So very good. So यहाँ current division लगाना है. Suppose current is going here I2, here current is going I1. Okay. So you need to find the current. What is current I1? So I1 will be 6, total 6, and this is the one branch. Here no current is going. Here current is 0. So this current is going here. Same current is going I1 here. So this is in series, and this whole branch is parallel to this one. So we take the resistance of opposite branch. Two branch, I'm repeating it, is one branch and this is another branch, both are parallel. The current division is parallel branch. Sum of resistance 3, 2, 7, 9, 9 kilo ohm, 2, 4, 6, 9 kilo ohm. Okay, so this cancel out, this is 3. Okay, and this comes out 2 ampere, 2 milliampere. Okay, so this is 2 milliampere, and again the resistance is 2 kilo ohm. तो यहाँ पे voltage कितना आ जाएगा? So voltage across capacitor 1 will be 2 milliampere into 2. That will be your 4 volt. Okay. Now what will be the second? VC2. What is VC2? So VC2 is like same like what is voltage across 4 ohm. Why? Here no current is going, this is open. So the potential of this point, the potential of this point and this point is same. Listen again, the point, this point, because there is no current here, so there is no voltage drop here. So whatever point is, this point and this point are same. Okay, same potential because there is no voltage drop. Voltage drop is 0, that means that is short. Okay, one type of short. Okay, this point and this point are same. You find this voltage, so this voltage is equal to this voltage. Okay, the VC2 will be 8 volt. 4 kilo ohm. So 4 into 2 milliampere. Okay, so this will be your 8 volt. Now you can easily find the energy. WC1 will be half. C is your C is how much? C 2 millifarad. C is 2 millifarad. Okay, V1 square is 16. So this become 2. This becomes 16 millijoule. WC2 will be your half. Capacitance against 2 millifarad, and this is 8 into 64. So to cancel, so this becomes 64 millijoule. So capacitor questions are very easy. Okay, just to make it open, and you can find what is the voltage across the capacitors. Okay. Now let us do one problem from this year's JEST exam. Okay,
Similar kind of problem they have given in the exam. Should I rub this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So let us see this one. You have minus plus, okay. Here battery is given with E. Here they have connected one resistance here, okay. This is capacitor C, and here they have connected one resistance here, okay. And then here also one resistance, and here also you have one resistance, okay. So they say all the resistances are same, okay. So if this is same, so I say this. बीच में से वो diagonal ही है ना, second वाला भी resistance. Diagonal, yes, go. Okay. So this is R, 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 R. Okay. So I need to find what is the charge in the capacitor in the unit of CE. Okay. So what is the charge? I need to find the charge of capacitor. Okay. Capacitor is, they are asking the unit of CE. Okay. Some number is there. Okay. In the unit of CE, I want to find how much charge is there. Okay. So just carefully look this circuit. So this branch is parallel to this voltage. Yes or no? This branch is parallel to this thing. Okay. So actually the water voltage is here, the same voltage is coming here. So basically this branch has no meaning. Okay, but just for your understanding, I am keeping this branch. Okay. So now this is my E. Okay, negative, this is positive, sorry, this is negative, this is negative, and here negative, and here is a positive. Okay, so this is my E. Okay, and here parallel to this is one resistance R. Okay, then here one resistance R again, R. Okay, then I have a capacitor C. Okay, and here I have one resistance R. Okay, then this R, then this R, these two are in series. Okay, so this 2R will be parallel with this one. Okay, so I am writing the total resistance of this branch. So these two are in series. So 2R is parallel with R. So R is parallel to 2R. So that will give me how much? R 2R equals to 3R. R cancel. So this will become 2 by 3R. Okay. Now this whole 2 by 3R is series with this one R. So R plus 2 by 3R. That is give me 5 3R 2 or 5R by 3. Okay. So this whole system. Okay. Now you have resistance here 5R upon 3. Okay. If you are in doubt, please ask whether it is correct or not. सर वो 5R/3 वाला एक बार वापस बताइए ना. हाँ, तो अभी ये दोनों सीरीज में है, समझ में आ गया? यस और ये इनके कॉम्बिनेशन में है. ठीक है, तो ये सब मिलके क्या रेजिस्टेंस बन गया? एक ही रेजिस्टेंस बन गया. कौन सा? कितना बन गया ये? 2/3R. नहीं 2/3R. ये 2/3R हो गया. अब ये 2/3 और या कितने सम हो गया? कितना हो गया? 5R/3 हो गया. ठीक है, ये सर ऊपर वाला R नहीं आया ना, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया ना. सम तो आपका जो 3 रेजिस्टेंस का सम तो ये है ना. दो सीरीज में थे, फिर पैरेलल थे. तीन रेजिस्टेंस का तो सम ये आया था. 3 रेजिस्टेंस थे यहाँ पे, 1 2 3. उन तीनों का पैरेलल तो ये आ गया.
और फिर ये दोनों सीरीज में आ गए, ठीक है। सर फाइंड क्या करना है? अब फाइंड करना है कि इस पे चार्ज कितना है। ओके इसका 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 कैपेसिटेंस सीधे रखा है, आपको चार्ज निकालना है। अभी क्या करेंगे, यहाँ से करंट आएगा, ओके, कुछ करंट यहाँ डिवाइड होगा, कुछ करंट यहाँ डिवाइड होगा। अब ये करंट यहाँ पे एक बार चार्ज हो जाएगा तो ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो गया, तो इसके ऊपर तो कोई चार्ज है नहीं। अब इसके ऊपर वोल्टेज कितना है, जो वोल्टेज इसके ऊपर है, समझ रहे हो। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है करंट की वैल्यू, करंट की वैल्यू कितनी है, ओके, निकालो करंट की वैल्यू कितनी आएगी। सो अभी देखो ये जो वोल्टेज आ रहा है यहाँ पर, अब करंट में उल्टा बना रहा हूँ, अभी प्लस यहाँ से है, ओके, ध्यान रखना, प्लस करंट यहाँ से आ रहा है, तो करंट यहाँ से आ रहा है, तो एक करंट यहाँ जाएगा, ठीक है, I1, और दूसरा करंट क्या आएगा, यहाँ आएगा I2। अब देखो यहाँ पर वोल्टेज कितना है, ये E है, सो E इक्वल्स टू क्या है, E इक्वल्स टू क्या है, I1R, यस और नो, E क्या है, यस और अगर मैं ये I2 करंट ये ले लूं, तो ये प्लस, अब ये दोनों सीरीज में हो गए, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, R प्लस 5R/3 कितना हो जाएगा, 8R/3, ओके। सर 5/8 ही आ रहा है। तो अभी ये जो आपका I2 है, ये जो करंट I2 है, ये कहाँ जा रहा है, इस 8R/3 में। तो इस पूरी ब्रांच में वोल्टेज कितना है, वो भी E है, यस और नो। If I write this is E, so this is E, this is E, this is E, and this E is fully, E is here, okay, same केवीएल लगाओगे तो क्या आएगा, ये वाला वोल्टेज इक्वल टू ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज इक्वल टू ये वोल्टेज, ओके। सो बेसिकली नाउ दिस वोल्टेज इज E itself, E, so this both are equal to E, that is I2 into 5R/3 is your E, okay. That's why I told you this resistance has no meaning, because here the voltage is coming same here and the same voltage is coming here. So you can, if you want, you can remove this one, okay. Now this is your relation from here. 8R/3 आएगा ना, 8R/3, yes, 8R/3, 8R/3, okay. So now you can calculate I2, so I2 will be your 3E, I2 is what, 3E upon 8R. Now you want the voltage here, now you know the current, so voltage across this capacitor, say VC, that will be current जो यहाँ पे आ रही है I2, यहाँ से आ रही है I2, okay, current 3 upon 8R into 5R/3, R कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया, 5/8E वोल्टेज है कैपेसिटर का, ओके। तो कैपेसिटर पे चार्ज क्या होता है, कैपेसिटर पे चार्ज होता है Q इक्वल्स टू CE, कैपेसिटेंस C, तो अब इस पे वोल्टेज आ गया CV, ओके, तो चार्ज कितना हो जाएगा, वोल्टेज इंटू C, ओके, सो 5/8 CE, Q इक्वल टू CV, ओके। अब पूछा है कि आपको चार्ज ये यूनिट ऑफ CE, तो आंसर क्या है, आंसर इज 5/8। क्लियर। सर मेरा आंसर वही आ रहा है, लेकिन मैंने पैरेलल का जो फॉर्मूला होता है ना करंट का, वो यूज किया। हाँ, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, करंट डिवीजन यूज किया ना, करंट डिवीजन, हाँ, एक हाँ, कंप्लीट करंट इनटू सम ऑफ रेजिस्टेंस डिवाइड। हाँ, वो से भी आ जाएगा, क्योंकि उसको वो तो ठीक है, उससे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। आप आई मान लो टोटल करंट, फिर उसमें I2 निकाल लो, तो उसमें क्या आएगा, उसी में आएगा। आपने आई माना इधर, ओके, और फिर और आई का वैल्यू कैसे निकाला, आई का वैल्यू टोटल वोल्टेज ई है, ई डिवाइड बाय सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस। यस आई निकालना है, तो आई यानी निकाला। तो आपको वोल्टेज पता ही है, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो सिस्टम का, इंक्लूडिंग दिस वन, ओके, including this resistance you have to calculate the total resistance of the circuit, divide by E, that will be give you current I, and once you know I, you can find out I2, okay, that is very good। ऐसे भी निकाल सकते हो। अगर आपको ये दिक्कत आ रही है समझने में
कि सर ने क्यों हटाया, तो आप अब निकाल लो करंट कितना है, आई कितना है, टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ओके, टोटल रेजिस्टेंस निकाल के आप आई निकाल लो, फिर इसमें से आप I2 निकाल लो करंट डिवीजन से और सॉल्व कर दो इसको। ठीक है, सर आपने ये बीच में से रेजिस्टेंस ओमिट किया है क्या? मैंने ओमिट किया था, हाँ। उससे फर्क नहीं पड़ता कुछ ना, क्योंकि वो सेम वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ तो इस सर्किट के लिए तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं ना, भैया इस सर्किट को यहाँ से वोल्टेज दो या यहाँ से वोल्टेज दो, बात तो एक ही है सर्किट। तो मेरे लिए सर्किट मीनिंगलेस था, तो मैंने इसको ओमिट कर दिया था, तो उससे भी आ जाएगा ये। ओके, जब भी पैरेलल पे रेजिस्टेंस उसको हटा दो, उसको कोई मीनिंग ही नहीं है। पैरेलल के रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, ये आपकी आपकी एक बैटरी है, उस पर ऐसा रेजिस्टेंस लगा हुआ है और बाकी सर्किट ऐसा लगा हुआ है, तो इस सर्किट का क्या मतलब है? आर यू गेटिंग? पैरेलल का मतलब ही क्या होता है, ये सारा सर्किट इसके पैरेलल लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस इसके पैरेलल लगा हुआ है, तो इस सर्किट, इस पूरे पैरेलल सर्किट को तो वोल्टेज यहीं से मिल रहा है, और ये इस रेजिस्टेंस का कोई मीनिंग ही नहीं है, तो मैंने इसको हटा सकते हैं हमेशा। जब भी पैरेलल लगा हुआ हो, डायरेक्टली लगा हुआ हो पैरेलल किसी बैटरी के यहाँ, उसको ओमिट कर दो। ठीक, अब ये चीजें तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुमको अपने आप आ जाएगी, ये कहीं लिखी थोड़ी होती। ओके, तो लेट मी सॉल्व वन मोर प्रॉब्लम। ओके, सर इसका जो आंसर है क्या आता है, यो 5 by क्यू 5 by 5 by 8 5 by 8 CE 5/8 C ई आ रहा है वी की वैल्यू। V की वैल्यू और C से मल्टीप्लाई कर दो। ओके या Okay, now I'm not deriving the formula, you know, when is capacitors, okay, capacitors in series. So whenever capacitors are series, their equivalent capacitor is given by C1, C2, C3, okay, 1 by Cn. This is the when capacitor in series. When capacitor are in parallel, when capacitors are in parallel, then you can write C equivalent is equals to C1 plus C2 plus C3 plus Cn. ओके, तो अपोजिट है, रेजिस्टेंस का अपोजिट है, पैरेलल में सीरियल की तरह ऐड होंगे एंड सीरीज में पैरेलल की तरह ऐड होंगे कैपेसिटर्स। ओके, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। So you have been given a capacitor okay, तो इसकी वैल्यू है 20 माइक्रोफैरड, 20 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड, ओके, 6 माइक्रोफैरड, 6 microfarad, then you have a 20 microfarad, and then you have 60 microfarad, 60 है, just let me check 60 है, चलो जो भी हो, क्या करना है हमको, 60 लिखो, 60 microfarad, okay, and this is like this। तो ये पूछ रहा है कि C इक्विवेलेंट कितना है, तो कैसे निकालेंगे? जैसे हम यहाँ पे रेजिस्टेंस में एक वोल्टेज सोर्स अज्यूम करते हैं, यहाँ पे भी आप सेम वोल्टेज सोर्स अज्यूम कर सकते हो। ओके, उसमें सेम करंट फ्लो होता है, इसमें सेम चार्ज फ्लो होता है जो सीरीज में होते हैं। ओके, तो अब यहाँ से जाओगे, तुम यहाँ से जाओगे, इधर से हम तो यहीं पे जाते हैं, तो यहाँ पे सेम चार्ज फ्लो होगा, तो ये बोथ आर सीरीज, और ये तो सीरीज है, इनका कॉम्बिनेशन इसके पैरेलल में है। ओके, सो आई एम टेकिंग दिस अ सीरीज, सो सीरीज है मतलब क्या हो जाएगा इनका, लाइक ऐड लाइक अ पैरेलल, 2 raised to power -6 into 5 into 10 raised to power -6, okay, divide by 25 microfarad. Okay, so this will be 5 and this will be 4. Okay, so the equivalent of this is 4 microfarad.
Okay, equivalent of this is 4 microfarad, and this 4 microfarad is now parallel to this one and parallel to this one. Okay, so equivalent of this one, and now all are in parallel. So parallel they can add. So you have a 4 microfarad, 4 microfarad. Okay, 4 microfarad plus 6 microfarad plus 20 microfarad. कितना हो गया? 30 माइक्रोफेरेड हो गया. Now this 20 microfarad answer. हाँ 20 है, वेरी गुड. अब ये 30 हो गया पूरा, और ये सबका पैरेलल, तो इफेक्टिव यहाँ पे 30 हो जाएगा, ये सब हटा दो. और ये 60 इज सीरीज इन 30, 60 सीरीज इन 30, तो 60 फैराड इज पैरेलल टू सीरीज में है, तो उल्टा तो ऐड कैसे करेंगे? 60 फैराड इनटू, चाहो तो ये हटाना, ये इसको भी लिखना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट अंडरस्टैंड माइक्रोफैराड है तो 30 microfarad, okay, upon 60 plus Right, sir. 90. Okay, so this is 0.0003 20 आ रहा है. Okay, so answer is 20 microfarad. Clear? हाँ सर 20 आ रहा है, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था. परमप्रीत आ रहा है यस सर. अभी? किसी को है जो अभी तक क्लियर नहीं है? ओके, अगर आस, और वरना मेरे को मिटा के आगे चले हम लोग. नीचे क्या लिखा हुआ डिवाइड में? डिवाइड में क्या लिखा हुआ है ये? 90 90 19 60 plus 30 90. ओके. किसी कोई क्वेश्चन है? सर आंसर क्या था? 20 माइक्रोफैराड. 20. ओके, चलो. नाउ प्लस माइनस 90 volt. Okay, then you have a 40 microfarad. Then you have here 20 microfarad. Okay, this is your V1, this is your V2. Okay, and this is your V3. V3 is 60 microfarad. Okay, this is V3, this is 60 microfarad. Okay, and then this is your 30 microfarad, and this is here you have a V4. So V4, and this is your 30 microfarad. बस आपको निकालना है V1, V2, V3, V4 निकालना है. ओके, तो दिस इज एग्जैक्टली सेम व्हाट यू डू फॉर योर रजिस्टर सर्किट, रेजिस्टेंस सर्किट. अभी क्या करना है कि पहले करंट को चलाते थे, अभी को चार्ज को चलाना है. पहले करंट डिवाइड होता था, नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ चार्ज विल डिवाइड. ओके, सो लेट अस से द इनिशियल चार्ज इज Q. Q is flowing through this one. So what is the V1? V1 is what? Q by C1. Okay. Now first I want to calculate what is total Q in the circuit. So in order to calculate total Q in the circuit, I should know what is total C in the circuit. I have voltage V. So let us first calculate what is Q in the circuit, like we calculate I in the circuit. Now what is Q in the circuit? Q is your V by C equivalent. Okay, let me calculate the C. बताओ C equivalent कितना है सर्किट में, बताओ. These two are in series, 30-60 series, and that is parallel to this one, and then they are series. बताओ कितना आ रहा है मुझे फटाफट. Q equals to CV होगा सर. Q equals to CV. Q equal to CV. Sorry, Q equals to CV. Q equals to CV. C equivalent V. बताओ C equivalent कितना है?
20 माइक्रोफैरेड। 20। हाँ। और कोई बता दो। Someone else? ब्रिजमोहन, C इक्वल कितना है? सर C इक्विवेलेंट इक्वल टू 20 माइक्रोफैरड। 20। 20 माइक्रोफैरड। चलो सबका 20 है तो गुड है। तो मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ ना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 60-30 सीरीज कितना हो जाएगा? 60 अभी निकाला ही था हमने। 20 20 20 पैरेलल 40 40 40 20। ओके, सीरीज 20 तो 20 ही है। ओके, so now C equal, you have C equivalent is 20. C equivalent is 20 microfarad. Okay, so now how much will be Q? So Q will be your 20 microfarad into voltage 90. Okay, so this you have now 180. How much? 200. 1800 into 10 to power minus 6. Okay, that is कितना आ जाएगा बताओ? 1.8 coulomb. Millicoulomb. 1.8 millicoulomb. So we put point here. I can divide by 10 also. So 3. So this is millicoulomb. Is it correct? Okay. अब 1.8 millicoulomb चार्ज हमारे पास आ गया है। ये चार्ज को मैं स्मॉल q से लिख देता हूँ, बिकॉज सर्किट में हमेशा ये इसको ऐसे ही शो करते हैं। So this small charge is moving like here. So now you can find what is V1. So V1 is simply how much charge across this capacitor divided by the capacitance 40 microfarad. Okay, capacitance C1. So this is 1.8 millicoulomb. This is a coulomb divided by C1 is 40 into 10 raised to power minus 6 farad. Okay, so कितना आएगा बताओ मुझे, निकाल के कितना आएगा? It should come 45 volt. Yes, sir. Okay, 10 से कट गया, 10 से 1000 ऊपर हो गया, 1000 का ये 1800 हो गया, 1800 को ये 180/4, that is 45 volt. Okay, तो वेरी गुड। अब तो क्या एक पता चल गया, ये एक पता है, दूसरा पता चल गया तो तीसरा अपने आप पता चल जाएगा। कैसा नो? किरचॉफ लॉ। नाउ यू नो दिस 90, दिस इज कितना आ रहा है? 45। ये कितना हो जाएगा V2? 50 माइक्रो। V2 50 कहां से हो जाएगा? V1 45 हो जाएगा सर। 45 हो जाएगा। वेरी गुड। 45 ये 90 45, ये भी 45 क्लोज लूप है, तो आपका V2 डायरेक्टली 90, V2 भी आपको मिल गया। V2 इज योर ओके, V2 इज योर 45 वोल्ट। अब यहाँ की कहानी तो खत्म हो गई, अब यहाँ निकालना है। ओके, सो इन दोनों के अक्रॉस भी वोल्टेज कितना है? इन दोनों के अक्रॉस कितना वोल्टेज है बताओ? 45। इसके अक्रॉस भी 45 भी है, ये बात तो पता है। तो या तो ऐसे सॉल्व कर लो ना, अदरवाइज दूसरा तकनीक क्या है आपको, अब आपको पता है कि यहाँ पे V2 कितना है, यहाँ पे चार्ज भी पता है, तो यहाँ पे कितना चार्ज अंदर गया। यहाँ पे 1.8 मिलीकूलम आ रहा था, उसमें कितना अंदर गया, Q1 कितना अंदर गया और Q2 इधर गया। ओके, सो आपको निकाल सकते हैं Q1 कितना आ जाएगा आपके पास में? Q1 आ जाएगा आपके पास में 45 वोल्ट इसका अक्रॉस है। सो Q to CV and 20 माइक्रोफैरड, 20 माइक्रोफैरड दिस इज ओके। तो कितना आ जाएगा ये बताओ? सो दिस इज 45 वोल्ट। ओके, Q C is 20 माइक्रोफैरड, कितना आ रहा बताओ? 900 into 10 raised to power minus 6, that is 0.9 कूलम। तो वैसे भी ये 45 है, तो आधा ऑब्वियसली यही जाना चाहिए। तो अब ये यहाँ पे 0.9 यहाँ चला गया, बचाओ 0.9 यहाँ चला गया, दिस इज 0.9। सर V3 15 वोल्ट आ रहा। अब निकालो, अब 0.9 पता है तुमको, आप यहाँ पे निकालो, तुमको निकालना है V3 आपका 0.9 कूलम, मिलीकूलम ना, मिलीकूलम डिवाइड बाय 60 माइक्रोफैरड। ओके, सो ये आपका एक जीरो और आ गया नीचे 600। ओके, सो ये 3, ये कितना हो गया 200, 10⁴, 10⁴ बच जाएगा तो ऊपर जाएगा तो 30 डिवाइड बाय 2, 15 वोल्ट आ गया। ओके, अब ये सेम चार्ज जो निकाला है 0.9, दिस इज गोइंग आल्सो हियर। सो V4 कितना आ जाएगा? V4 विल बी 0.9 कूलम
डिवाइड बाय 30 माइक्रोफेरेड, तो आपके 30 वोल्ट आ जाएगा। 30 सेम डिवाइड हो रहा है 60 का, 30 का हो रहा है, तो आपके पास ये 15 आया, ये आपके पास 13 वोल्ट आ गया। और ये 15 और 13 मिलके 45 होना चाहिए, और 45 हो रहा है। तो सर्किट ऐसा ही सिंपल ही है जैसे हमारे रेजिस्टेंस के होते थे। सर हाँ V3 निकालने के लिए हमने 0.9 ऐसे ही लिया ना कि सम ऑफ ऑल चार्जेस हाँ इज हाँ हाँ, आधा चार्ज वहां चला गया इस ब्रांच में, आधा चार्ज उस ब्रांच में चला गया। ओके सर हाँ, वो V4 क्या डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, दिख नहीं रहा है। अभी तुम आप बात जो बताया उसको समझने की कोशिश करते तो अपने आप देखने की जरूरत नहीं पड़ती। 1 मिनट, मैं उसको ऊपर कर रहा हूँ। हाँ, V4 में डिनोमिनेटर में 30 है, 30 माइक्रोफेरेड, 0.9 मिली कूलम डिवाइड बाय 30 माइक्रोफेरेड। यस ओके, अभी कोई डाउट हो तो पूछो, पता सकता। नहीं सर, क्लियर है, बस 3/2 कंफर्म आएगा करना ना था। V3, हाँ कंचन बोलो। 3/2 आएगा ना V3। 3/2 कहाँ से आएगा? V3 तो 15 वोल्ट है, 30/2 15 आएगा। ओके सो लेट अस स्टॉप हियर। ओके, अभी क्वेश्चन तो पूछो, अदरवाइज आई एम क्लोजिंग दिस वन। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।